Hello guys, welcome to my YouTube channel and सबसे पहले तो sorry यार I was damn busy so वीडियो अपलोड नहीं कर सका मैं, but this video is a vlog cum unboxing video of my first DSLR which is Sony a68 and let's get started. And guys, this is not a review video, it's just unboxing video cum vlog video which I wanted to share with you that I bought a new DSLR. Let's get started. If you want a review video on this please मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि मैं इसकी भी एक रिव्यू वीडियो भी बनाऊंगा। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग। सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं बॉक्स। दिस इज आउटर बॉक्स, 3 इनर बॉक्स 1 2 and 3। ओके, आफ्टर दैट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बॉक्स से। इस बॉक्स में है एक लेंस विच इज रैप्ड इन बबल रैप फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। अच्छी, yes, this is the lens, Sony 18 to 55 mm lens. Yes, 18 to 55 mm lens. As you can see, this is the cap and this is the front view of the lens. Nice, which is very nice. So इसको recap कर देते हैं। So here आप देखते हैं इस बॉक्स में है एक HDMI cable for connecting your DSLR to TV or laptop, whatever you want to. And after that the body box which contains body the DSLR. सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले है इसमें एक चार्जर, चार्जिंग केबल, and after that shoulder strap, Sony shoulder strap. Okay, after that we have got data sync cable, a battery which is very compatible, and this is our body, DSLR body. Okay, this is our DSLR body and this is the rear view of this DSLR and this view is front view of DSLR. And as you see, design is very sleek and very compatible with your hand. It's very easy and convenient to grip your DSLR. तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट से। Yes, and the battery space is here, which is nice. और this is the battery of अभी हमने इसको स्टार्ट कर लिया है। क्वालिटी इज वेरी गुड। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लैपटॉप की। यहाँ पे है एक ऑन ऑफ बटन, हाई एसओ बटन, एंड दिस इज वाइट बैलेंस, दिस इज मेन्यू बटन, एंड दिस इज रोटेटिंग व्हील ओवर हियर। वी हैव स्पेस फॉर फ्लैश लाइट और माइक, व्हाटएवर यू वांट टू कनेक्ट विद इट। आफ्टर दैट वी हैव अ मूवी बटन इन द रियर व्यू, रोटेटिंग व्हील for temperature and shutter speed. You can set it here. The play button, this is the play button. You can watch your photos and videos. As this screen is tiltable screen for upper angle and lower angle. इसी upper angles और lower angles की videos को easily and conveniently shoot किया जा सकता है, तो देखने में भी easy रहता है। As you can see, after that we jump into after that. Okay, so this is the front view of this DSLR. Flashlights, guys, Sony का compatible model है, तो इसमें एक और फीचर भी ऐड किया गया है which is sensor mode. आप ये देखिए, this is the sensor mode activation. This is sensor mode deactivate. व्यू फाइंडर में देख सकते हैं आपकी स्क्रीन की बैटरी बचती है, and this is very cool. It looks very cool also. After that we have 24 megapixel zoom. Look at that. Autofocus is very good, as you can see, and we had 79 autofocus points across 15 areas, which is very cool and very good. So इसके साथ I have bought one more lens. This is 7300 lens with Tamron company, which is compatible with Sony DSLR. Guys, Sony का बहुत महंगा है, 96,000 का, so I have bought this Tamron
7300 जूम। तो इसको भी आगे से इसका फ्रंट व्यू चेक कर लेते हैं एक बार। दिस इज कैप। ओके, दिस इज द पावर ऑफ 70300 zoom camera lens, and this is normal and micro mode. It will increase your picture quality and इतना zoom I think काफ़ी होता है कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के लिए। ये इसका रोटेटिंग व्हील। This is the front view of this lens 7300, and so guys इसके फटाफट कुछ फोटोज क्लिक कर लेते हैं। So guys, I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी, and if you like my video then share it with your friends, and if you have any suggestion or if you have any question about my DSLR you can ask me in my comments। and यहाँ पर आपको मेरे चैनल का लोगो दिख रहा होगा, तो प्लीज़ उसको क्लिक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू।